September intake of 2024. Now January intake of 2024. Options दो है, समझ नहीं आ रहा है because there are questions like is September intake good for me? Yeah, I should go for January intake. Well, we will solve this query for you. But yes, before starting this video on this special day of Christmas, first of all, a warm wishes of Christmas to everyone. And yes, we have launched our special offer on Christmas. So check out our Instagram for it to get more details out of it. नाउ टॉकिंग ऑफ जैन एंड सेप्टेम्बर इनटेक, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहला कंपैरिजन बेस्ड ऑन वैरायटी ऑफ कोर्सेज की बात करें तो इफ़ यू लुक ऑन द साइड ऑफ सेप्टेम्बर इनटेक आपको वैरायटी ऑफ कोर्सेज मिलेंगे, बहुत सारे कोर्सेज है, आप चॉइसेस बहुत है आपके पास। whereas if you look at January intake there are very few or very limited courses to choose from. It is really risky. If you are looking for a particular course then you got to compromise with that because there are less chances that you will find one. Now the point number 2 here is of university options. क्या कितनी यूनिवर्सिटीज आपके पास अवेलेबल है? सितंबर इनटेक में जा रहे हैं 50+ पब्लिक यूनिवर्सिटीज को आप फ्रीली टारगेट कर सकते हैं। बट इफ यू आर प्लानिंग फॉर जनवरी इनटेक देयर इज अ डिसएडवांटेज। सिर्फ 2 या 3 ऐसी यूनिवर्सिटीज आपको मिलेगी जो आपको जनवरी इनटेक प्रोवाइड करती है। सो वी वुड रिकमेंड यू go for September intake. The most important pointer of this video, that is scholarship. If you are planning for January intake, आपको नीड बेस्ड स्कॉलरशिप तो नहीं मिलने वाली है। Whereas in September intake आपको नीड बेस्ड स्कॉलरशिप मिलती है, दैट इज गवर्नमेंट रीजनल स्कॉलरशिप, जिसमें आपको ऑलमोस्ट 7 लाख रुपीज पर ईयर मिलते हैं बेस्ड ऑन योर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। बट इफ यू आर प्लानिंग फॉर जनवरी इनटेक तो वहाँ पे नीड बेस्ड स्कॉलरशिप आपके पास अवेलेबल नहीं है। Whereas if you are good with academics or have something extra in your profile, तो then you can target with merit based scholarships too. Point number 4 here is of number of seats, because as you look in Indian organization और Indian education system, जैसे हमारा कोर्स या कॉलेज स्टार्ट होता है नॉट जैन बट जुलाई अगस्त समथिंग अराउंड दैट, वेरएज उनके लिए पीक टाइम होता है सितंबर। सो इफ यू आर प्लानिंग फॉर सितंबर इनटेक आपको वैरायटी ऑफ कोर्सेज जो मिल रहे हैं उसके साथ नंबर ऑफ सीट्स भी ज़्यादा मिलती है। दैट मीन्स गेटिंग एडमिशन इन सितंबर इनटेक इज वे मोर अचीवेबल एज कंपेयर टू जनवरी इनटेक। सो देयर आर हायर चांसेस to get your admission if you target September intake rather than January one. But now you might have question, क्या September intake of 2024 is open for now? And yes, it is open for everyone. बहुत सारे courses के लिए September intake of 2024 open भी हो चुका है. So if you are someone planning to go to Italy for your studies, it is high time. But how to start your process? Simply call us on this number for a free counseling session and get all the details that you need. Now number 5 here is of number of calls available. आप सितंबर इनटेक को टारगेट करते हैं तो नंबर ऑफ कॉल्स आपके पास 3 से 4 कॉल्स होते हैं। कॉल्स मतलब टाइम पीरियड इन विच यू कैन टेक एडमिशन। कैसे? लेट सपोज आपका सितंबर इनटेक है तो आपका सितंबर में किसी यूनिवर्सिटी का एडमिशन स्टार्ट होता है एंड दे स्टॉप इट इन लाइक व्हाट डू यू से अक्टूबर और नवंबर, इस टाइम पे इन्होंने स्टॉप किया। देन आफ्टर 1 मंथ और 2 मंथ वापस से ये कुछ टाइम पीरियड के लिए इनका एडमिशन ऑन करते हैं फिर ऑफ कर देते हैं। तो ऐसे आपके पास 3 से 4 चांसेस रहते हैं इफ यू आर गोइंग फॉर सितंबर इनटेक। यहाँ पे आपको ये 4 ऑप्शन मिलेंगे। बट इफ यू टारगेट फॉर जनवरी इनटेक आपको सिर्फ एक ही कॉल मिलेगा। दैट मीन्स दैट इज क्वाइट रिस्की। यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज देयर या यू हैव टू पुट योर सेल्फ ऑन रिस्क कि हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। सो दैट इज देयर। सो if you are someone who is little worried about it, go for September intake. Well, the next pointer, last but not the least, that is of time that you have to fulfill conditions or time to fulfill conditions. कैसी conditions? Let's suppose आपकी university आपको बोलती है okay, we'll get you the admission but the condition here is you got to get us your IELTS certificate maybe, या आप बोल सकते हैं कि आपके जिस कोर्स के लिए आप जा रहे हैं उससे रिलेटेड हमको एक LOI चाहिए आपके कॉलेज से या आपके स्कूल से। सो ये जो ऐसी कंडीशंस है छोटी मोटी, ये कंडीशंस को फुलफिल करने का आपके पास टाइम रहेगा सितंबर इनटेक में। क्यों? बिकॉज सितंबर इनटेक में जब आपका स्कॉलरशिप का भी प्रोसेस रहता है तो यू हैव अ बिग फ्रेम, एक टाइम फ्रेम बहुत बड़ा रहता है आपके पास पूरी प्रोसेस को करने के लिए। जनवरी में स्कॉलरशिप इज नॉट देयर, टाइम जो रहता है प्रोसेस का वो काफ़ी कम रहता है। सो ये जो कंडीशंस को फुलफिल करना है इसमें भी आपके पास टाइम कम रहेगा। वेयर सितंबर में यू विल हैव मोर टाइम टू कंप्लीट योर प्रोसेस एंड फुलफिल दिस स्मॉल कंडीशंस दैट निटी-ग्रिटी डिटेल्स दैट यूनिवर्सिटी आस्क फॉर। ओके, सो इफ नाउ समवन आस्क यू कि किस इनटेक के लिए जाना चाहिए, if you are someone like me who is looking for a need based scholarship,
नो डाउट ऑफकोर्स गो फॉर सितंबर इनटेक, एंड ओवरऑल भी आप देखेंगे इस वीडियो के पॉइंटर्स के हिसाब से सितंबर इनटेक इज एन आइडियल ऑप्शन फॉर यू. बट या जनवरी में ऐसा कोई बहुत ज़्यादा बुराइयाँ नहीं है. यू कैन ऑल्सो प्लान फॉर जनवरी, बट इन जनरल यू माइट ऑल्सो लुक एट सितंबर एट द बेस्ट ऑप्शन रेदर देन जनवरी इनटेक. सो यस, एज वी हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, सितंबर इनटेक के लिए एडमिशन चालू हो गए. व्हाट यू नीड टू डू, जस्ट कॉल अस ऑन दिस नंबर फॉर अ फ्री काउंसलिंग सेशन एंड जल्दी से जल्दी एडमिशन का आपका प्रोसेस स्टार्ट करिए. सो यस, दिस वाज ऑल इन दिस स्मॉल वीडियो. फॉर मोर सच इंफॉर्मेटिव कंटेंट, चेक आउट the I button and subscribe to our channel, because such content is always on our channel, flaring from here and there. So yes, stay with us for more such updates. And yes, once again, a warm wishes of Christmas, and what do you say, Merry Christmas.